मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान 2024-25चे बजेट मांडले। विरोधकांच्या कोतान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत नापास झाला। विशेष म्हटल्यार बजेटान कितेंय आसले तरी ते चालीक लागतले हेचो विरोधकांचो विश्वास ना। जाल्यार दिव्यांगा सारकिल्ल्या उपेक्षित घटकांची बजेटान दखल घेतल्या अशें म्हणत सरकारातल्या मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्याक 100% मार्क दिल्या। पळयात शेंबऱ्यांतले तुका 35 फुड्या पास जावपाक सरकारान 400 390 आंतले 105 कितें प्रोजेक्ट कंप्लीट केले। सो दॅट इज ऑलमोस्ट 28-29%। सो दॅट मीन्स सरकार प्रमोद सावंत सरकार फेल जालो हे बजेटांक सरकारान आनी तेंगेले आजच्या न्हू फाटले 2-3 बजेट अशें करून ते फेलू जाले तर लोकांक दाखोवपाचे तेंगे दांत वेगळे आनी खावपाचे दांत वेगळे। सो डेफिनेटली म्हाका दिसता सरकारान गंभीरपणान आनी मुखेलमंत्री गंभीरपणान तेजे विचार करून एक बरो बजेटान दिवपाचें। वी आर नॉट हॅपी विथ द बजेट। सो कितें आनी कितें येवपाक जाय जावपाक पर्टेनिंग टू हेल्थ सेक्टराक म्हाका दिसता 1000 कोटी दिले त्यो म्हाका इवन हेल्थ मिनिस्टर इज नॉट हॅपी। स्पोर्ट्सा फेसिलिटी व्हडले कांय ना पयशे नाय। सो दीस आर द मेजर थिंग्स। सरकार म्हणटा सगळे कडेन उदक आहा लायट रोड्स जाय। देर इज नो मच प्रोविजन फॉर दिस बेसिक फेसिलिटी। सो डेफिनेटली आय डोंट थिंक इट्स अ गुड बजेट। थँक यू। द अचिवमेंट ऑफ पर्पल फेस्टिवल इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवला कडच्यान जायते इश्यूज दिव्यांगाच्या हातून भितर सुदारणा हाडपाक जाय, तांचे जिवना भितर नवी उर्बा हाडपाक जाय। त्या खातीर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी एक बरी डिपार्टमेंटूय क्रिएट केल्ले आसा, दिव्यांग डिपार्टमेंट, द डिपार्टमेंट फॉर पर्सन विथ डिजेबिलिटीज। ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आयज स्वतंत्ररित्या ह्या डिपार्टमेंटाच्यो आपल्यो गरजो मांडपा खातीर जाता। पयलीं कितें आसतालें की आमकां स्पोर्ट्स जाल्यार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन, एज्युकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट हांचे कडेन खुबशे वाटाघाटी करची पडटाल्यो। आयज तांकां एक स्वतंत्र फंडिंगय दिल्लें आसा आनी स्वतंत्र पावर्स दिल्ले आसात। एक अत्यंत बरी गजाल आसा की एक नवे म्हाका दिसता की रिव्होल्युशनरी क्रांतिकारी अशी स्टेप्स आयज दिव्यांगाच्या बाबतींत गोवा स्टेटीन भितर आमकां पळोवपाक मेळटा। पयलीं सद्या 72.1% ऑफ द थिंग्स दॅट वर अलॉटेड फॉर द लास्ट फायनान्शियल बजेट ही जालें नाय। म्हणजे 70 आनी 2% वस्तू जालें नाय। कळ्ळें? सो दॅट इज द रेशियो। आनी आतां फुडलो बजेट दिला तो फकत मिनिस्ट्रीचा हो इतलो पयसो हो तितलो पयसो इतलेंच। सो हें विकसीत गोंय स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तें सगळें फकत बरें पेपराचो हार, फकत पेपराचीं उतरां आनी उतरांचो फोदोरो। हेजे बरें इन रियलिटी कांयच ना। विकसीत गोंय ना, विकसीत गोंयकार ना, स्वयंपूर्ण कांयच ना। आनी आमच्या इतलें आतां जी आवट ऑफ 100 असो एक पाट 72% जालें ना, एक पाट मोर दॅन 85% हें काम जालें। दिस इज द होल प्रॉब्लम हियर। देर हॅज टू बी अकाउंटेबिलिटी इन ईच डिपार्टमेंट्स। हे आज बजेट डिले म्हणून जायना, तेज डिलिव्हरन्स जें आहा तें जायना। आनी कित्याक जायना? बिकॉज द चीफ मिनिस्टर डज नॉट टेक अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंटा कडेन वर्क ऑर्डरू जायना काबार करून। डिपार्टमेंटान तें काबार जाता म्हणल्यार रोखडें कितें म्हटलें, वी आर गॉन फॉर इलेक्शन कोड म्हटलें। इलेक्शन जाता म्हणल्यार एप्रील जातलें। सो नथींग वील हॅपन। आज मरे अकाउंटेबिलिटी गरजेची आनी अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप। द होल प्रॉब्लम विथ दीस बजेट इज द बजेट इज जस्ट अ ब्लफिंग बजेट एंड दीस ब्लफिंग बजेट हॅज कंटिन्यूड लास्ट इयर, दीस इयर एंड दॅट्स द प्रॉब्लम। आनी हे आज गोंयकारांक त्रास जायत आसतले कित्याक रेकॉर्डे डिलिव्हरन्स जायना। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स डिलिव्हरिंग द बजेट। दॅट इज द होल प्रॉब्लम। अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स डिलिव्हरिंग द बजेट घाल, फायन घाल आनी पुट अप अ प्रोसेस इन प्लेस दॅट इफ यू आर नॉट एबल टू युटिलाइज दिस बजेट, this is going to be the penalty. That is what is required, I think, for this government. गोवा 365 खातीर आमची पुराय टीम।